Hi everyone, this is Priyanshi, and today we will be discussing the important questions and answers, the ideal answers to those questions for chapter 3 of psychology, which is human strengths and meeting life challenges. So, in this chapter, you could get 1 markers, of course, 2 markers, 3 markers, 4 markers. Chances are very slim कि आपको 6 marker आएगा, but you may get. So, let's be prepared for the best case and the worst case scenario, and let's discuss all of the questions. सो ऑब्वियसली इस चैप्टर स्ट्रेस और हेल्थ के बारे में है, स्ट्रेस के रिलेशनशिप्स के बारे में है। सो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है, डिफाइन स्ट्रेस। सो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले एक देनी है ऑपरेंट डेफिनेशन। ना ऑपरेंट डेफिनेशन जो है वो ये डेफिनेशन होती है कि आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस क्या है, आपने स्ट्रेस के बारे में क्या सीखा जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा। So, in this, you can write that stress can be defined as the pattern of responses an organism makes to the stimulus event that disturbs the equilibrium. It exceeds a person's ability to cope. Now, equilibrium ka matlab for those who do not know is balance. Okay. So, it is neither a response nor a stimulus. It is a transactional process between the environment and the individual demands. Now, if you want to gain brownie points, क्योंकि obviously 2 mark का question है, आप बोर्ड लिख के आ रहे हो, so you cannot leave any stone unturned. So in that case आपको एक तरीके से एक operant definition के साथ साथ एक cited definition भी लिखनी होगी। साइटेड डेफिनेशन का मतलब होता है जो किसी और की बात को हम कही हुई है और हम उसको वापस से रीइंस्टेट कर रहे हैं कि हाँ उसने ये कहा था और इसका मतलब ये होता है, स्ट्रेस से हम ये समझ सकते हैं। So we will talk about Hans Selye that defines stress as a known specific response of the body to any demand. It means regardless of the cause of threat, the individual will respond with the same physiological patterns of reactions. How is stress a basic ingredient of life? Now, obviously, we are talking about stress and we cannot separate stress from our life at any cost. But at the same time, if you look at the nature of the question, you'll realize that it is an open-ended question. मतलब कि इसका आंसर है subjective and not objective in nature. Subjective आंसर है, 2 mark का क्वेश्चन है, 2 points लिख के नहीं आ सकते, बट 2 के अलावा हम लिख के क्या? So in that case, you should write an example. So answer to this question should be that stress is a basic ingredient of life. A biological system is equipped with some stress alarms that are essential for survival and allow one to function effectively in many situations. Without undergoing stress, there can be no constructive and creative activity. Example may you can talk about to perform better in exams and assignments, there is certain amount of stress that is necessary. वर्क प्लेस भी लिख सकते हो, यू नो स्कूल लिख सकते हो, एज पर योर अकॉर्डेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। 3 mark का क्वेश्चन है और जो एकदम से पेपर में आया कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी, बट देयर वाज स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी इन द चैप्टर। सो इफ यू लुक एट द टर्म यूल अंडरस्टैंड जो पर्सनालिटी स्ट्रेस के रेजिस्टेंट हो, मतलब जिस पे स्ट्रेस का असर कम होता हो या बहुत मिनिमल होता हो या होता ही ना हो, वो पर्सनालिटी क्या होती है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। So studies by Kubasa have shown that people with high levels of stress but low level of illnesses are labeled as stress resistant personality. They share 3 characteristics which are referred to as personality traits of hardiness. It consists of commitment, control, and challenge. Commitment to work, commitment to hobbies, and commitment to family, social life. कंट्रोल मतलब हो गया कि उनके कंट्रोल है, उनके कंट्रोल में उनके एक्शंस हैं, उनके एंटीसीडेंट्स हैं, उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और उनका एक जिंदगी में एक पर्पस है, एक डायरेक्शन है, उनके दिमाग में दे हैव अ वे ऑफ अचीविंग थिंग्स। चैलेंज शुड बी दैट कि वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव या नॉर्मल या नॉर्मेटिव या न्यूट्रल नेगेटिव किसी भी तरह के चेंज के लिए रेजिस्टेंट ना हो, उसे थ्रेट की तरह ना देखे, बल्कि चेंज को एज अ चैलेंज ले। So this is a stress resistant personality. Now, as I mentioned, the chapter is about stress and its interaction with health. So naturally health का question तो आएगा. So be prepared for it. So how resilience and health are related to each other. So resilience has been described as the capacity to bounce back in stressful situation. It is manifested in the form of self-worth, self-confidence, self-independence and self-resilience.
Resilient children can face adversity and lead psychologically healthy and meaningful life. Resilience is defined in the perspective of three resources: I have, I am, and I can. To develop resilience, children and adolescents need more than one of these strengths. Very simple answer, you all can attempt it. नेक्स्ट इज हाउ पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग कैन बी अचीव थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड. इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से मन बना के नहीं लिख के आना. यू हैव टू बी वेरी psychologically amped up. You have to think from a psychological viewpoint. So you should write about perceiving reality fairly and accurately and not living in denial, tolerating and understanding different view of point of views, having a sense of purpose in life, having a sense of responsibility, accepting blame for failures and taking credit for your own success, being open to new ideas, matlab not being resistant to change, activities or way of doing things, having a good sense of humor, to be able to laugh at oneself and absurdities of life, to see things in a proper perspective, matlab arrogant bhi nahi hona hai. Okay. Now, a very important question which you should expect in your board should be the various types of stressors. चैप्टर स्ट्रेस का है तो स्ट्रेसर्स की तो बात करेंगे. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स बट द क्वेश्चन इज फॉर 4 marks, राइट? सो यू जस्ट कैन नॉट end it on three stressors that you write. You have to write a conclusion in this to gain the extra 1 point. सो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो हो गए, जो हमारी खुद की बॉडी से होते हैं, एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, भले से वो चेंजिंग मौसम हो, चाहे फिर वो कोई एक बायो नेचुरल कैलामिटी हो, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, जैसे भी रिसेंट अर्थक्वेक आया है एनसीआर में. इट कुड बी दैट ऑल्सो. सो दिस कुड बी अ लीडिंग सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन इंडिविजुअल्स. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब जो हमारे खुद के दिमाग में होता है, जो हम अपने आप अपने दिमाग में रखते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस है, ये रखना है और इसे यहीं दबा के रखेंगे. दिस कुड बी फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, वर्क प्लेस प्रेशर, कुछ भी हो सकता है. इसलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर हम बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, because the psychological stress of employees was increasing too much. So this is a type of stressor which is very high in urban areas where a lot of population is working in corporate sector. Next is social stress. It is induced from external factors and results from interaction with other people. Social events like death or illness in the family, strained relationships, rapid social change, poverty, discrimination, and lack of social support are the reasons of stress. However, the intensity and magnitude of the impact of these are a subject to individual differences. Psychology ना ऐसे नहीं होती, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर. You have to merge everything and then think of what could be the possible best answer to it. So you should write about individual differences यहाँ पे. कि हाँ, स्ट्रेस सबको हो सकता है क्योंकि एक एम्प्लॉय को स्ट्रेस दिया दूसरे को भी दिया, but both of them react to it differently, and that is it. That is the individual difference. नेक्स्ट इज अ 6 marker जिसकी चांसेस आने के कम होंगे, बट लेट्स डिस्कस इट. Stresses result in a variety of stress reactions. So stresses result in a variety of stress reactions which may be physiological, behavioral, emotional and cognitive. ठीक है, बट दिस इज अ स्टेटमेंट, यू हैव टू बिल्ड ऑन इट. दिस इज अ प्रॉम्प्ट जो आपको दिया, ये होता है प्रॉम्प्ट वाले क्वेश्चन, और ये सबसे ट्रिकी होता है. तो मैं लगेगा एक सेंटेंस ही तो दिया है, इसमें से क्या हम तो आराम से बना लेंगे, बट दिस इज अ प्रॉम्प्ट क्वेश्चन. यू हैव टू स्टे अंडर द लूप एंड स्टिल वेरी रेलिवेंट, एंड यू हैव टू राइट अ 6 marker टाइप का लंबा आंसर टू इट. सो पे अटेंशन. So physiological level arousal plays a key role in stress related to behaviors. The hypothalamus initiates action along two pathways. The first pathway involves autonomic nervous system, which is ANS. The adrenal gland releases large amount of epinephrine, norepinephrine into the bloodstream. This leads to psychological changes seen in the flight-fight response. There's some fight एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. The second pathway involves the pituitary gland which secretes the corticosteroid which is cortisol, जो एक्चुअली में हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है. अब ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन हमारे को अराउजल देता है. अराउजल के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हम अराउज नहीं हो सकते जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है. सो कॉर्टिसोल जो होता है वो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, एंड उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. The emotional reaction to experience of stress include negative emotions such as fear, anxiety, embarrassment,
anger, depression, or even denial. The behavioral response are virtually limitless depending on the nature of stressful event and also the person who is undergoing that stressful event. The confrontation action against the stressor, which is fight, and withdrawal from the threatening event, which is flight, are two general categories of behavioral response. एक बच्चा है, उसको गंदे मार्क्स मिले टेस्ट में, एक है वो फाइट करेगा, अगली बार अच्छे लाएगा, पेरेंट्स को बता देगा, दूसरा और कहेगा अरे छोड़ना, मेरी तो मैथ्स खराब ही है, मैं नहीं कर रहा. So this is fight and flight responses. Cognitive responses include beliefs about the harm or threat an event poses and beliefs about its causes or controllability. These include responses such as inability to concentrate and intrusive, repetitive, or morbid thoughts. ये सारे हमारे cognitive symptoms हो गए जो हमारे cognitive I would say cognitive paraframe में रह जाते हैं. दिमाग में होते हैं, हम सोचते रहते हैं इफ, बट, व्हाट नॉट, एंड दे रिमेन देयर जब तक हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होती रहती है. सो दिस इज इट फॉर चैप्टर 3 एवरीवन. आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे आपको. बट इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, then please put it in the comment section. We'll definitely get back to you, and until then keep studying for your boards. All the best.